This is the red sand boa, a non-venomous, calm and harmless snake found in India. It is protected under the highest Indian wildlife laws, giving it the same protection status as the tiger. Despite this, some old and new bizarre stories about the red sand boa make it one of the most illegally traded reptiles in the country. We spoke with researchers, wildlife rescuers, forest officials, and people involved in the illegal trade to learn about the myths and misinformation that fuel the crime and harm a rather docile creature. The red sand boa is a thick, reddish-brown burrowing snake. It digs into loose mud and sand and spends much time underground. Mostly nocturnal, it waits for rats, mice, and lizards to walk close to its hiding spot before striking. The snake is widespread across India in dry, sandy, and rocky terrains, often near farms. If we talk about Delhi NCR, the most dominant kind of habitat we have is either river Yamuna floodplains or we have this proper Aravali scrubland. They occupied this kind of habitat because this is more like a scrubland, sandy area, and the sand boa basically prefer this kind of grassland where there is some loose sands. It prefers that sandy habitats and keeps on burrowing. This sand-loving snake has a unique look. It gets it from its tail. The thick and blunt tail resembles its head, the reason for its moniker, Do Muha, which means double-headed. This is a kind of a defense mechanism. Whenever they sense any danger, they coil themselves into a ball and they place their tail over their body, because most of the time जो भी bird इस पे attack करते हैं, जो भी predator इस पे attack करते हैं, वो tails रहती है. And sometimes this is also a strategy to hunt. इसके दो मुंह होते नहीं हैं obviously. But around the country, the red sand boa's appearance and the Do Muha tag have sparked superstitions, a driving force behind its trade. We don't know about snakes, that is why they are so much prevalent, like these kind of myths. Nirmal Kulkarni is a reptile expert and one of the authors of a 2023 report on the red sand boa trade. This two-head superstition has not done good for the snake at all. There are some which also believe that this snake has the ability of choosing on which side to go on every single day. The trade name for this snake also is called double engine. But besides this, there are a whole lot of other superstitions because of which this snake actually started going into trade. One of the important ones is that this snake can lead people to hidden treasures, or the fact that if you keep this snake in your house, you will actually suddenly become rich. There's another superstition of the snake actually attracting a lot of wealth by the weight of the snake. The heavier the snake, the more stronger its pull of attracting treasures or wealth, and that's really turned into a really bad aspect for the snake, because we've had instances of people making the snake swallow larger slabs or tubes or balls of lead, which make the snake heavy. ये जो काला जादू होता है सिर्फ दो मुंह से होता है. एक तो काला जादू होता है तो वजन के हिसाब से होता है, वजन वेट. तो जैसे 4 किलो से ऊपर होना चाहिए. 4 किलो से कम हुआ तो वो नहीं चलेगा. मान ले कोई तरकीश कर रहता है ना, इसकी बिजनेस करता है, तो इसका वजन बढ़ाया जाता है. वैसे कहीं इंजेक्शन लगा दिया या कुछ और खुलवा दिया उसको या कुछ और उसके अंदर डाल दिया तो वजन बढ़ाया जाता है. उस चीज़ से उस सांप को नुकसान पहुंच जाता है, इससे उसकी जान भी जा सकती है, चली भी जाती है. Every time that we've actually seen or seizures of the red sand boa, they've always been live individuals. We've also found individuals which have been malnourished. We know that they've been kept for a long time, not fed properly. This very nature of the snake actually being easy to handle, easy to take care, easy to transport from one place to
Another is the reason why this has remained a lot in as a trend. लोगों के बीच में जो अफवाहें फैली हुई हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं, सच्चाई कोई नहीं है। ना ही इसका मेडिसिनल वैल्यू है, ना ही ये कोई तांत्रिक क्रिया में यूज होता है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जैसे 5-6 लोगों का गैंग है, वही परचेजर हैं, वही सेलर हैं, वही तांत्रिक हैं, वही सब कुछ हैं। तो उनका डीलर फिर बीच में जो डीलर होता है वो फिर उनसे आपस में मुलाकात करवाता है। फिर एक बायर लेके आते हैं, उसी गैंग का आदमी होता है वो। बस एक आदमी फंस जाए, कोई 5-7-10 लाख जितने भी पैसे लगा सकता है, ये गेम चलता रहता है। तो जब उनका काम निकल जाता है, किसी थर्ड पर्सन को जब वो फंसा लेते हैं, उनका काम निकल जाता है, वो गायब हो जाते हैं एकदम से। वो फिर पिक्चर से एकदम से ही गायब हो जाते हैं। There's a lot of spotlight put on the price of this snake. They have actually given a price tag or a value to the snake which goes in lakhs and crores of rupees actually. And that, unfortunately, instead of basically highlighting on how the people were caught, highlights the cost and gives it a price tag, because of which more and more people, rather the younger generation, a certain section of people, youth from villages, from these people who really aspire to do bigger things with quick money, actually get into this aspect of finding these snakes and fall into this trap, and that is a cause of worry. A highly inflated price tag, superstitions about magical powers, and unscientific claims of medicinal properties have all amplified trade and become the leading causes of the red sand boa's population decline. Even today, misinformation and superstitions keep emerging. One such recent myth is that the snake contains a rare earth element called iridium. The iridium thing is a new one, basically been seen in the last 5 years. It has suddenly come up, and mostly during the time, during or after COVID, that this thing has come up. Before that, it was always, the entire snake that was being used. The snakes were never opened up. क्योंकि ये नेटों पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, हर चीज़ के अंदर चल रहा है। जो भी कहीं भी देख लो, नेट पे देख लो, कुछ मंगवा के देख लो, तो 2 मुँह सांप आगे आएगा। Wildlife trade is rampant online and through chat platforms such as WhatsApp and YouTube. For authorities, monitoring and regulating the online space is a challenge. In fact, during our research, we came across a YouTube channel advertising the snake. Videos posted over the past few years and even this year showed different sand boa individuals being measured and weighed along with the date and price. And there was a phone number. तो उसका कैसे डीलिंग होगा? मैडम पहले नहीं, आप माल देखो, माल ओके है तब मेरे को पेमेंट दो मैडम, लेकिन महाराष्ट्र आना पड़ेगा, धुलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लेकिन फिर उसको हम लेके कैसे आएंगे दिल्ली? तो आप 4 व्हीलर लेके आ जाओ, ट्रेन से लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन की वजह से गाड़ी कहीं भी चेक होती है, कहीं भी ये खड़ा कर देते हैं लोग जी, दूसरे राज्य में, ये राज्य वो राज्य, क्योंकि इलेक्शन के बाद में कोई हाथ भी नहीं देगा आपको। और फिर मैं दिल्ली के साइड कैसे वो कैसे जिंदा कैसे रहेगा इतने टाइम तक? कैसे होगा? वो बंद रहेगा? मैडम वो तो ज्यादा करके मट्टी में रहता है, 2-2 महीना 3-3 महीना रहता है, वो मट्टी खाता है। और आप बैग में आपको मट्टी डाल देंगे, वो मट्टी के अंदर उसको बैग में छोड़ देंगे। उसको तुम 1 महीना भी रखोगे, 1 महीना भी खाना नहीं दोगे, तो भी उसको कुछ नहीं होगा। Sand boas do not eat mud. The trader and I didn't exchange names or have any further phone calls. But before hanging up, he gave me a glimpse of the buyers and their demands. आप बिंदास लेके जाओ। अच्छा, और अगर उसको कुछ लेडीज, आप तो लेडीज है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं आपको, कोई रोकेगा भी नहीं गाड़ी को। जी जी जी, तो मतलब वो बैग में रखे? तो आते हैं वैसे तो मैडम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर से भी लोग आए थे, लेके गए। अच्छा, तो आपके उनको भी तो कोई दिक्कत नहीं आया, अच्छा। सिर्फ लेने वाले लोग आए। लोग तो क्या बोलते हैं, हाँ भाई 4.5 kg का है, काटा कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं। हमको तो कोई बोलता नहीं है इसका क्या चलता है, क्या होता है, क्या काम में आता है, ये तो हमको कुछ पता नहीं है मैडम।
Sadly, we found a few other YouTube channels as well, indicating the extent of the trade happening digitally. The 2023 report by Wildlife Conservation Society India that Nirmal worked on documented 172 unique media reports of illegal red sand boa trade from January 2016 to December 2021 from over 18 states. Maharashtra and Uttar Pradesh have the highest number of reported seizures. But there is a caveat. We always keep saying this, that these seizures were high because of the fact that probably the enforcement was better. The intelligence network there has been really strong. मेरे टेन्योर में जैसे 4 से 5 केस हुए हैं रेड सैंड बोआ ट्रैफिकिंग के, और उनमें ये है कि एक स्टेट के आदमी इन्वॉल्व नहीं हैं और अलग अलग स्टेट के आदमी इन्वॉल्व हैं, और ये नहीं है कि ये कम्युनिटी बेस्ड है कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी कर रही है इसको, सभी कम्युनिटीज़ के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये नहीं है कि इसमें अनपढ़ लोग इन्वॉल्व हैं, ये तो नहीं है कि अनपढ़ लोग ही अंधविश्वास में पड़ते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही मिलते हैं हमें, और वेल इस्टेब्लिश्ड लोग जो हैं जिसके पास ठीक ठाक पैसा है वो लोग इसमें इन्वॉल्व मिलते हैं। We have been saying this very clearly that we cannot basically blame or even remotely think that this is being done just by this or by any of the snake handling communities or traditional communities who've been associated with snakes in any way. My major concern even now is the size of the snakes. Every time that we are looking, the size of the snake is a big snake. Mostly it's a big female. A lot of times they are really healthy snakes, and these individuals are basically targeted, collected, kept properly, and then sold. देखिए स्पीशीज़ में इम्पैक्ट तो आ रहा है। पहले जो सैंड बोआ जो है आसानी से दिख जाता था, कहीं भी अगर हम कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं खेत में जा रहे हैं तो रास्ते में दिख जाता था वो, अभी वो नहीं दिख रहा है। I rescued this sand boa from a farmhouse अभी कुछ 4 दिन पहले। 2 दिन तक मैंने इसको ऑब्जर्वेशन में रखा, and now this is fit for release into the wild, and this is the perfect habitat for the release of the snake. Red sand boas are at risk due to their illegal trade and the rising demand to have wild animals as pets. But there is another threat looming. दिल्ली एनसीआर में जो फ्लड प्लेन्स हैं वो ऑलरेडी बहुत पहले से ही कम हैं, एंड जितने भी फ्लड प्लेन्स वाले एरिया हैं आइदर दे आर ऑक्यूपाइड एज अ फार्म लैंड, एंड पीपल आर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड अभी वो जो हैबिटेट जो हुआ करते थे वो बचे ही नहीं हैं। व्हेन आई स्टार्टेड माय फील्ड वर्क, so this snake was very common, and like what I have seen, now we are not getting sand boas in the wild.